Hello everyone, I'm your Vishal Chabda. Welcome to my YouTube channel. Back again with our new topic, electrostatic potential due to an electric dipole. Yes. Firstly, we can take two opposite charges, which we known as electric dipole. Minus Q plus Q. Here it is the point P. At that point we find electric dipole. This is the point O, and let AP is the position vector R1 and BP is the position vector R2 and OP is the R vector. The distance between this 2A, and here the angle is theta. So firstly, we can take a dipole moment P. We know that dipole moment is equals to magnitude of any of the charges multiplied by the distance between them. And now electrostatic potential or electric potential at P due to Q1 due to माइनस के इस चार्ज करके इस पॉइंट से सब तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा था V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 एंड सिमिलरली फॉर V2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. Here are the two equations, equation number 1 and equation number 2. So the net potential V is equals to V1 plus V2. So put the values of V1 and V2 in equation number 3. So V is equals to minus Q upon 4 pi epsilon naught R1 plus Q upon 4 pi epsilon naught R2, and V is equals to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1. Equation number 4. Yes. Now we have to find the values of R2 and R1 from this diagram or geometry. So for the geometry or according to triangle of vector addition, R1 is equals to R square plus A square plus 2AR cos of theta. अपन लेके चलते चलते R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos of theta. But similarly, R1 is equals to R square plus A square plus 2AR cos of theta. Equation number 5. And for R2, R square plus A square प्लस 2AR हाँ जी इस इक्वेशन वास्ते आप थीटा ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਸੋ cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤਾਂ r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ हाँ जी cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2AR cos of theta. Equation number 6. From equation number 5 we can take हाँ जी R1 the square. ये सारी इक्वेशन जो आप R square ਨੂੰ कॉमन कर लिया तो अपने को बन गया 1 plus A square upon R square सारा डिवाइड हो जाएगा 2AR cos of theta divided by R square हाँ जी R नाल कैंसिल होगी and R1 square is equals to R square 1 plus A square by R square plus 2A cos theta upon R. So here it is, the A is very less than R. बहुत छोटी R now. So A by R भी very less होएगा 1 now. And also A square by R square is very less than 1. So we neglect this term from this equation, and this equation forms
Now neglect this term a square by r square. So r1 square is equals to r square 1 plus 2a by r cos of theta. Now reciprocal this term, सॉरी पहले अंडर रूट ले लो, तो अपने को आ गया r1 इज इक्वल इथों भी रूट हो जाएगा, इस टर्म का उत्तर क्या आ जाएगा cos थीटा की पावर 1/2। पर अपन वैल्यू की चाहिए 1/r1 एंड 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r 1 plus 2a by r cos of theta the value minus half. Similarly for r2 1 by r, हाँ जी सिंपल की डिफरेंस आएगा, सबट्रैक्शन का साइन आ जाएगा सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ। Now we can solve this equation by binomial expression. What is the binomial expression? 1 plus x the power minus n. So the power क्या आ जाएगी अपनी अज्ञात ਦੇ ਵਿੱਚ 1 minus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on। हाँ जी ये है जी अपनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसको ਆਪਾਂ यूज करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1 plus nx टर्म बन रही है, n ਕੀ आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 by r1 1 by r 1 minus 2a by 2r cos of theta। और जेड़ा हाफ सीगा अगे आ गया, 2 ना 2 कैंसिल हो गया, तो 1 by r1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1 minus a by r cos of theta। इक्वेशन नंबर हाँ जी देते आप 6 नंबर इक्वेशन। एंड सिमिलरली फॉर r2 1 by r जो हाफ अगे आएगा 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a by r cos of theta। इक्वेशन नंबर 7 यूजिंग इक्वेशन 6 and 7 in इक्वेशन नंबर 4 ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ r2 ਤੇ r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ v q by 4 pi epsilon naught। ਹਾਂਜੀ 1 by r ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 by r2 ਤਾਂ 1 plus a by r cos of theta minus ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 plus a by r cos of theta। Now 1 cancel, v is equals to q by 4 pi epsilon naught r a by r सेम है तो 2a by r cos of theta हो जाएगा। अपने को आ गया v is equals to 2a into q 4 pi epsilon naught r square into cos of theta। हाँ जी 2a by r की होएगा अपना डायपोल मोमेंट 4 pi epsilon naught r cos of theta। when theta is equals to स्पेशल केस है जी अपना theta is equals to pi और 0। हाँ जी cos pi कितना होता है -1, cos 0 होता है 1। that means the v की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ on the dipole axis आएगी। that means p is equals to 4 pi epsilon naught r plus minus मतलब maximum या minimum। and when theta is equals to pi by 2 that means 90, cos 90 is equal to 0, then electric potential is also 0। now the next topic is equipotential surface। हाँ जी equipotential surface केड़े होंदे ने? An equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is same। कोई भी ਆਪਾਂ कोई ऑब्जेक्ट लेता ਜਾਂ कोई सिंगल सपोज कोई सिंगल चार्ज है ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ इलेक्ट्रिक फील्ड होणगी हर एक डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। this is the electric field lines। and this is the field, and this field at that point or at that point, and this field or this surface is called equipotential surface।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर एक पॉइंट पे जेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है की रहेगी सेम रहेगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ले लेने जी आप, सपोज देयर आर हाँ जी देयर आर 3 प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है जी अपनी क्रॉस कर गया फील्ड चो सारी प्लेट्स चो, दिस इज फील्ड लाइन। So at every point of any plate the electric potential is same, so this surfaces is called equipotential surfaces, मतलब हर एक पॉइंट पे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो की अपनी सेम। हाँ जी की अपनी फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन है हर एक प्लेट चो क्रॉस हो रही है, तो हर एक पॉइंट ते जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है सेम है। दैट मींस ऑल द 3 सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ जी, नाउ स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। सो इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन। हाँ जी, किसी सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करना ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, जी बाहरली फील्ड है उस तो किसी अंदर इनर पार्ट को की करना प्रोटेक्ट करना, उन बोलते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर, हाँ जी कंडक्टर दे अंदर ऑलवेज जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होंगी है जीरो होंगी है, बिकॉज देखो तो कोई भी कंडक्टर है अपना ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। So we know that inside the conductor electric field is zero. So to protect the delicate instruments, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ delicate instruments ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ we them ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ enclose ਕਰ ਦਿੰਦੇ enclose in a hollow cylinder, so it's the protect is called and this is called Faraday cages and that hollow cylinders or hollow conductor is called Faraday cages. For example in ਆਪਾਂ example ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਥੰਡਰਸਟॉर्म ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰ ਔਰ ਬੱਸਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਨ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰ ਔਰ ਬੱਸ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।